Okay, welcome everybody. Hope you're doing great. How are you? First of all, I would like to congratulate and thanks everybody. In fact, because like last कुछ दिनों से मैं Facebook लाइव सेशन कर रहा हूँ और लाइव आकर के आप लोगों से बात करता हूँ, and I'm very excited to see कि आप मेरे सारे लाइव सेशंस को अटेंड कर रहे हो और अटेंड करने के साथ साथ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो. So I can tell you one thing, when once you are committed, I am also committed to come back to you with certain very very important points जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे. So today I've got something very very special, but let me start with my introduction. For those who are new here, my name is Santosh Srivastav, and I am a digital and life coach, and I'm also founder of 21st Century Business Hub.com. And right now, I'm working on a mission to help 100,000 people to help them become digital entrepreneurs. So if you are thinking or if you're planning that I should be, becoming a digital entrepreneur in some time, then I can tell you, I think you should watch these live sessions because ये कहीं ना कहीं आपको help करेंगे. Because मेरे जितने भी live sessions हैं, they are focused towards giving you some tips of my own life experiences जो मेरे पिछले 25 साल के corporate career का experience है, in a way जिसको आप अपने life में लेकर के implement करें और कहीं ना कहीं अपनी life को better कर सकें. परफेक्ट. सो आज मैं क्या लेकर के आया हूँ और आज मैं जो लेकर के आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है. वी आर ऑलरेडी सीइंग द वे इंटायर थिंग्स आर चेंजिंग. वी आर ऑल गोइंग थ्रू ऑलरेडी अ बिग पैंडेमिक राइट नाउ जहाँ पर आप देखते हैं कि कोविड 19 जो है वो दिस हैज रियली इम्पैक्टेड द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इट इज इम्पैक्टिंग, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और वो हमें समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, बिज़नेसेस करने के तरीके भी बदल रहे हैं और हमारे जो बिज़नेस को मार्केटिंग करने के तरीके भी बदल रहे हैं. एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ अगर मैं बोलूँ कि हम सिर्फ़ अपने ट्रेडिशनल या नोन मेथड्स को लेकर के या उसी के भरोसे बैठ कर के अपने बिज़नेसेस को बिल्ड करेंगे, देन आई कैन टेल यू वी माइट नॉट बी इन द लीडिंग एज. और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जहाँ पर मैं लीड करूँ, then in that case you have to understand कि the way time is changing, the way things are changing, आपको अपने आप को और अपने processes को भी थोड़ा सा tweak करना पड़ेगा और change करना पड़ेगा. And my today's session is all about this. So next 25 to 30 minutes is going to be very special for you, and I would request you to have pen and paper because मैं बहुत सारे points cover करूंगा आपको through my mind map, and my objective would be to give you maximum information, and आप maximum information note कर सकें, and that is what would be your objective in that case. Perfect. So let me start with कि एग्जैक्टली क्या बदल रहा है. अगर मैं बात करूं कि द वे बिजनेसेस आर चेंजिंग, द वे थिंग्स आर चेंजिंग, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो बदल रही हैं. तो अगर हम वो चीजें समझ जाएंगे, देन इन दैट केस आई कैन टेल यू इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ. ओके. सो लेट मी एग्जैक्टली टेल यू, देयर आर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है कि आज के डेट में पहली चीज है और ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं इस चेंज को. वन इज डेफिनेटली वी नो दैट द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, द वे थिंग्स आर चेंजिंग, तो वो इम्पैक्ट कर रही है. बट एक्चुअली में देखा जाए सो देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच आर रियली इम्पैक्टिंग द चेंज in happening in businesses and marketing in India, especially if I talk about. First, digitalization. The way time is changing, the way entire business are getting digitalized, and सारे बिज़नेसेस के प्रोसेस अलग हो रहे हैं, सारे बिज़नेस के करने के तरीके बदल रहे हैं. एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ कि जो नए बिज़नेस स्टार्ट होने वाले हैं या और इवन दोज़ पीपल हू आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर बिज़नेस, इट माइट बी एट एनी स्केल, इट माइट बी एट अ स्मॉल लेवल और मिड लेवल और हाई लेवल, बट किसी भी लेवल पे डिजिटलाइजेशन हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर बिज़नेस. आप इससे अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो इफ यू वांट टू ग्रो. Okay. Second important point, definitely COVID-19 is something which has really impacted big time, and COVID-19 has given a new dimension कि अगर आपको बिजनेस करना है तो जो अभी तक हमारे ट्रेडिशनल वेज थे जिसको हम कंसीडर करते थे, आज के डेट में कोविड 19 हैज कम अप विद अ बिग पॉइंट कि व्हाट इफ दिस हैपेंस अगेन. टुडे इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, एंड व्हाट इफ इट हैपेंस अगेन. आर वी रेडी टू फेस दैट, स्पेशली इन योर बिजनेसेस? उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिग फैक्टर व्हिच इज कमिंग राइट नाउ, वेयर यू सी मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेसेस या ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग बिजनेसेस आर चेंजिंग. Whether it is like you're seeing education की बात करूं, so nobody can think of doing an online education, and everybody is thinking about it. And this is not only present, this is going to be the future also. It's a new thing which has been added to it कि हाँ, you have to include the online feature because anything can happen and you have to be ready for that also.
So these are the two important factors which are really impacting this change. Okay. And बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल रही है नाउ, द वे थिंग्स आर चेंजिंग, द वे दिस डिजिटलाइजेशन इज हैपनिंग, और इवन द वे दिस कोविड 19 इज इम्पैक्टिंग, लोगों की जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है वो भी बदल रही है। ओके, फर्स्ट, what people are preferring right now, people are preferring digital action. That means आप जो काम आज कर रहे हैं, whether it is reporting, whether it is communicating, whether it is sending some information, whether even it is talking to people, anything which you are doing it right now, people are preferring digital action. That means if you do something जो कि जो digital nature में हो, लोग prefer कर रहे हैं इसको। सेकंड, वर्क करने के कॉन्सेप्ट भी बदल रहे हैं। मतलब आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि आप काम करते हो, एंड काम करने का मतलब यू टॉकिंग फिजिकली, मीटिंग वन वन ईच अदर, एंड देन जो भी आपके काम करने का कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूं वो भी चेंज हो रहा है। अगर आप आपको आज देखते हो, अभी तक जो ऑफिस में कल्चर था, व्हेन आई टॉक अबाउट कोलैबोरेशन स्पेस, पीपल यूज टू मेक देयर ऑफिसेस लाइक दिस, जहां पर लोग एक साथ बैठ करके कोलैबोरेशन कर सके। बिकॉज in offices, the one of the biggest point where the scrum and agile spaces comes up is all about कि you create spaces जहां पर लोग collaborate करके ideas को share कर सकें। but now the working concept has completely changed and people are preferring more and more online collaboration in place of physical collaboration. सो एक्सपेक्टेशन बदल चुकी है एंड अकॉर्डिंगली बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। ऑफिस स्पेस नाउ, इफ यू टॉक टू मी अबाउट ऑफिस स्पेसेस, आज के डेट में मैं अगर बोलूं कि मैक्सिमम कंपनीज अपने लेवल पे दे आर ट्रीटिंग ऑफिस स्पेस एज वन ऑफ द बिग ओवरहेड राइट नाउ, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच दे हैव इन देयर माइंड इज राइट नाउ कि अपने स्पेस को कैसे इफेक्टिव यूटिलाइज करा पाए, बिकॉज नाउ दे विद द न्यू मैंडेट पीपल दे हैव टू हैव लेस पीपल इन द ऑफिस, and at the same time agar less people karna, then how do they manage the office space effective utilization? So definitely office space has become a big overhead right now for all the companies, and employees are also being considered as overhead right now. but अगर मैं आज की डेट में बोला जाए तो इसमें एक और फीचर ऐड हो गया है कि they are being treated as overhead, but the second question is coming is how we can utilize them very well digitally, even if they are sitting at home, how we can ensure कि वो effectively utilize किए जा रहे हैं। and ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं it is creating a kind of dissatisfaction at both ends actually. From employer side, they're not 100% clear कि क्या employee 100% अपने effectively time को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। From employee side वो भी worried है या वो भी frustrate हो रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि पहले जो मैं टाइम देता था अब उससे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, because now the office is office hours खत्म हो चुका है, वो 9 to 6 का ऑफिस जॉब नहीं रह गया। now the office has become a 24/7, so the new time for the employees and even employer is 24/7, and this is something which is a big change right now. not everybody is able to accept it, हर आदमी इसको accept नहीं कर पा रहा है, but yes, this is a change. It's like you have to, no, we have to welcome the new word, and this is the new word. Your new timing, office timing is 24/7. You are at your home, you are in front of your laptop, फोन आपके पास में है, और you are working 24/7. So you can't say कि मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है actually. Okay, this is how things are changing. And अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केटिंग की बात करूं, तो जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं या जो भी उनकी मार्केटिंग है, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट शुड बी डन डिजिटली। दैट इज व्हाट इज एन एक्सपेक्टेशन, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप इसको अपने आप को इसके हिसाब से गियर अप करते हो, अभी से मैं बोलूंगा अपने आप को प्रिपेयर करते हो, देन इन दैट केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर। बट अगर आप इसको भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, देन आई कैन टेल यू इन फ्यूचर यू हैव टू फेस द हीट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बट अगर मैं बात करूं बिजनेस प्रोसेसेस में क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज डेफिनेटली जहां एक्सपेक्टेशन में चेंज हो रहा है वहां प्रोसेसेस में चेंज हो रहा है। एंड द फर्स्ट चेंजिंग हैपनिंग इज इन मार्केटिंग। और मार्केटिंग की जहां मैं बात करूं तो डेफिनेटली द फर्स्ट चेंज विच इज हैपनिंग इज कि नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज टेकिंग ओवर राइट नाउ इन अ बिग वे। जहां पर पहले फिजिकल मार्केटिंग हुआ करती थी, प्रिंट मार्केटिंग या हो गया लाइक डिस्प्ले मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग हुआ करती थी, आज के डेट में इट्स more favored to have a digital marketing as compared to physical marketing. And I can just give you an example कि 2018 में like I would say statistica की अगर sources से अगर मैं बताऊं, 2018 का जो data है that talks about the digital marketing business was roughly around 586 billion dollar, sorry, 586 billion rupees in India. This is the size of the business which happened in 2018. Then you can well understand कितना बड़ा डेटा है ये। ओके, और अगर मैं आपको इसको जस्ट अभी समराइज करके दिखाऊं, तो you can see it here कि this is what is a backup.
अगर 2018 का बैकअप देखा जाए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज टेकन रफली 19%, 19% डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जो स्पेंड हुआ है मनी, दैट इज समथिंग विच हैज गॉन टू ई कॉमर्स, एंड अदर इज 13% एफएमसीजी, टेलीकॉम, banking sector, consumer durables, auto, media entertainment, retail. So majority of this segment has now started spending money in digital advertising or digital marketing, and this is I would say this is the need of an hour. So you can't say yourself nahi matlab this is not something I know I don't want to have it, because you have no option, you have to go for it only, you have no option there. Okay, so this is something which is happening right now, और अगर मैं आपको बोलूं कि you have to be ready for it, you can say नहीं, okay, I don't want to get into it because I'll make sure कि I do my physical marketing. You have to be ready for that, because this is what which is changing in India. Okay, नेक्स्ट आई वुड से डुप्लीकल जितने भी डुप्लीकेबल वर्क हैं, डुप्लीकेबल वर्क्स आर नाउ गोइंग टू गेट ऑटोमाइज्ड. Okay, now when I say duplicable work, that means ki like doing email, okay, in terms of responding to your new customer, responding to your existing customer, or getting the new leads, or building up relationship. तो email marketing is mostly getting automized. और अगर मैं आपको आज के डेट में बताऊं, आज के डेट में ऑलरेडी there are multiple tools available, there are multiple companies who are right now working on automating email marketing, कि कैसे आप उनके टूल्स को यूज करके, जो पहले मल्टीपल लोग काम करते थे जिसके लिए, उसके लिए एक सिस्टम, एक टूल काम करेगा, एंड द इंटायर ईमेल वर्क वुड हैपन इन जस्ट वन गो. The entire automation can happen, sequencing can happen in a way you need not to worry about कि आज कौन सी मेल जा रही है, कल कौन सी मिल जाएगी, परसों कौन सी मिल जाएगी. Everything can be automated. And then second is your funnel building. अगर आप अपने business के लिए funnel build कर रहे हैं, where you're getting the lead and then you're converting it into process and then you're retaining it also, the entire funnel building process also is getting automized. There are a lot of tools available. If I talk about some tools for email marketing, that would be GetResponse, ConvertKit, Mailchimp. There are many companies who are very big providing email marketing support to you. If I talk about funnel building, you got ConvertKit, you got ClickFunnels. So there are many companies who are working on giving you automation, स्पेशली इन दिस एरिया, जहां पर आप अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो बाय यूजिंग देयर टूल्स. लीड जनरेशन के लिए अगेन, लाइक लीड जनरेशन इज नाउ गेटिंग ऑटोमाइज्ड, वेयर लाइक अर्लियर यू यूज्ड टू वरी टू मच अबाउट लीड जनरेशन, कहां से लीड जनरेट की जाए, कैसे लेके जाए, एंड यू आर इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी इन लीड जनरेशन. बट नाउ this is getting automized. You can generate your lead by spending less amount of money digitally. Okay, कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड कस्टमर रिटेंशन, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि हाउ डू यू रिटेन योर कस्टमर, हाउ डू यू गेट योर कस्टमर ऑन बोर्ड इन अ राइट वे, जहां पर मैनुअल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती थी. आई कैन टेल यू this is something which is also getting automized, and you can have the best customer onboarding experience or best customer retention experiences utilizing the automation tools, and it's available in the market. I'm definitely not going to talk about कि क्या tools हैं, कौन से हैं, processes हैं जो आप use कर सकते हैं, but I can tell you this is what which is happening at present right now in India, and you have to be open for that कि अगर ये हो रहा है और मुझे अपने business में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो मुझे अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है. यू कांट बी सिटिंग आइडल थिंकिंग कि मेरे बिजनेस में कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हिट योर डोर, इफ नॉट टुडे देन टुमारो. ओके, देन बिजनेस मॉनिटरिंग, द इंटायर बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए अर्लियर वेयर यूज्ड टू हैव पीपल यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स जो उनके बिजनेसेस के बारे में उनको बता रहे हैं, कैसे करना है, किस तरह करना है, एंड गेटिंग वन पेज कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ वेयर यू कैन मॉनिटर योर एंटायर बिजनेस. आज के डेट में दिस इज सो इजी, जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन you can have the entire business monitored on one single screen, and you don't need to hire an expert for that. So all these kind of works are getting automated, और ये business process change हो रहा है. You also have to be ready for that. Okay, and then I would say जो specialized work है, जितने भी specialized work हैं वो भी digitalize हो रहा है आज के डेट में. You can see जितने भी specialized work आप जो कर रहे हो, but again वो repetitive nature के हैं, but they are specialized in nature. वो भी वर्क ऐसे हो रहे हैं जो आज की डेट में आई वुड से प्रोसेस चेंज हो रहा है, वो भी ऑटोमेट हो रहा है. दैट मीन्स यू डोंट नीड स्पेशलाइज्ड पीपल जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करते हैं, बिकॉज दैट प्रोसेस कैन बी ऑटोमाइज्ड आल्सो इन टुडेस टाइम. सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर बात करूं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग अगेन लाइक अगर मैं बोलूं कि दो चीजें बड़ी क्लियर हैं आज के टाइम पे. मैनुअल, अगर मैं मैनुअली सेल्स एंड मार्केटिंग को अपनी कंपनी में अगर टेक केयर कर रहा हूँ, देन योर ग्रोथ इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज टाइम एंड ह्यूज मनी इन सेल्स एंड मार्केटिंग थ्रू मैनुअल प्रोसेस. बट अगर आज की डेट में आप डिजिटल प्रोसेसेस को यूज करते हो,
digital techniques को यूज करते हो, like the way I told you, automation and all those things, then in that case your sales and marketing की जो growth pattern है वो exponentially बढ़ सकता है. So that is what which is changing right now. Process बदल रहे हैं, and I can tell you one thing: if you are at a stage where you already have your own business, or if you're at a stage where you're thinking कि okay, it's time for me to get into a business, then I can tell you, just hold on. Things are changing, and when things are changing, you have to be, watchful कि मैं जहां पर टाइम और मनी इन्वेस्ट करने वाला हूं, that should cater not only present but it should also cater the coming future. Okay, perfect, sounds great. If it is looking good to you, write down in the comment box it looks good. And I can tell you, information, ये जो information है, आपको जानना जरूरी है, because अगर आप नहीं जानोगे, और ये हर जनरेशन में हुआ है, जब भी कभी कुछ नया चेंज आया है, देयर आर फ्यू पीपल जिन लोगों ने चेंज को पहले से फील किया, और फील करने के बाद में अपने आप को उसके लिए अपग्रेड कर लिया. एंड देन देयर वर सम पीपल हु डिड नॉट रिएक्टेड टू इट कि हाँ, ये जो चेंज आ रहा है, दे थॉट कि ओके, अभी चल रहा है, चलने दो. बट what happens, like in future, जिन लोगों ने पहले एक्शन ले लिया था, they were the person who were in leading position later on, but those who did not change themselves later on, they were forced to follow the change. So definitely my suggestion to you would be that you should be in a leading position, not in a position to force to follow the change which happens and which comes to you on the way. Okay, परफेक्ट. एंड सीधी सी बात मैं बोलूँ कि ये प्रोसेस तो चेंज हो रहे हैं, बट इसका एक साइड इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है. वो साइड इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि आई कैन टेल यू, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि रिडंडेंट होने वाली है इन नेक्स्ट 4 to 5 years of time. And this is not, I'm not telling, this is a report which has been already published in 2018 September by World Economic Forum. And अगर मैं 2 साल के बाद, इनफैक्ट आई जस्ट रिसेंटली सेंट एन आर्टिकल to various social platform, it's like reviewing post 2 years, that article which was made by World's Economic Forum, कि there are about 22 jobs which are going to get redundant, by 2025. In fact, tomorrow I'll be having a session, especially I will be talking about what are those 22 jobs जो कि redundant होने वाली है. But in just nutshell, if I tell you कि majority of sector जो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि जिसके अराउंड जॉब्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, डेफिनेटली those who had a back end job, like I would say majority of BPOs kind of thing, or financial support, जितने भी support functions होते हैं, whether it is the financial support or some other sales and marketing support, बहुत सारे जो support related functions हैं, एनालिस्ट, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब रिडंडेंट होने वाली है. लॉयर्स हैं, इनकी भी जॉब रिडंडेंट होने वाली है, इनके बिजनेसेस भी रिडंडेंट होने वाले, बिकॉज दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट जॉब, बट अगेन इट्स लाइक विद एक्सपर्ट विद द डेटा बैंक, इट कैन बी ऑटोमाइज्ड आल्सो. ओके, एंड देन जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है, प्रिंटिंग मीडिया की बात करूं, या प्रिंटिंग न्यूज एंड मार्केटिंग है, न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंटिंग मीडिया है, एड्स हैं, going to get obsolete plan very clearly. And then next is drivers, clerks, business administrator. अब जितने भी drivers हैं, आप देख रहे हो कि आज की डेट में ओला, उबर, like they are right now promoting people for a business which is of aggregator model, where anybody who become part of it becomes a partner and they get a business. It's a win-win model for company and the people also. But do you know what these companies are thinking about? They are not thinking about you. They are not thinking about the people who are right now their business partners, because they also have to grow and they also have to adopt the change जो future के लिए तैयार हो रहा है. और future of, I would say, अगर मैं auto industry या taxi industry की बात करूं, future of taxi industry is where you will have an automated driving car, or you will have an automation in the car where drivers are not required. Think about at that time, जो ये इतना बड़ा सेगमेंट है जहां पर ड्राइवर्स आर बेसिकली राइट नाउ रनिंग देयर फैमिलीज एज अ बिजनेस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम? ऑल द क्लर्क्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो आज की डेट में दे आर राइट नाउ सर्विंग कंपनीज और वर्किंग फॉर कंपनीज फॉर 10, 20, 30 years of time completely, एक एक कंपनी में, दो दो कंपनी में काम कर रहे हैं, their positions are going to get related. And when I'm telling all these things, I can tell you, जब मैं लास्ट 2 साल को एनालाइज कर रहा था, 2018 to 2020, what has been told and what is the present situation right now, already I can see the impact coming on some of the jobs already. कुछ जगह पर आ रही है, और कोविड 19 ने तो उस पर और एडिशनल फायर डाल दिया है कि जो शायद अगले 2 से 3 साल में इम्पैक्ट आना चाहिए था, वो शायद और पहले आना शुरू हो गया. सो दैट मीन्स कि
many jobs are going to get redundant, and you have to be ready for that. Next is assembly and factory workers. Now, most of the manufacturing companies has got assembly lines, and they have workers who are right now involved in assembly of the product. But as time is changing, most of the things are going to get automized. And the moment it is automized, then there is a big threat on the people who are working as a worker or as a middleman, also, I would say, manager or assistant manager who are managing things there. There is a big risk for them because उनकी भी job कहीं ना कहीं redundant होने वाली है. Now my question, I'm not here to give you something where you get scared about it, but what I'm trying to tell you very clearly is when we already know कि ये change होने वाला है, when we already know कि this has been already forecasted, my only question to all of you who are right now, if you feel कि हाँ आप इस categories को belong करते हो या आप अभी यहाँ पर job कर रहे हैं and you feel कि यार this is where I belong right now, I can tell you one thing: when you already know something is happening, it's better to be prepared. ये एग्जैक्टली ऐसे है लाइक कोविड 19 जब स्टार्ट हुआ था, व्हेन इट स्टार्टेड और इम्पैक्ट इसका होना शुरू हुआ था, सो देयर वर सम पीपल who got prepared themselves. उन्होंने बोला नहीं, I think this is something which have to be take care of it, or they started taking prevention in terms of whether it is improving their immunity, whether it is like being living there inside home only, not moving outside, using the mask or anything. So they started using the prevention method so that कि वो उसके लिए प्रिपेयर हो गया कि हाँ अगर ऐसा कुछ आता है तो आई एम रेडी राइट नाउ टू फेस इट. But there are some people who thought कि नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. But later on, now when this has really become a pandemic and when this has really become a big issue right now, those people are the one who are facing challenge right now. Similarly, my question to all of you, जितने भी लोग इस समय जॉब कर रहे हैं and you find yourself, in fact tomorrow you should attend my session, live session on where I'm going to talk about कि कौन सी ऐसी 22 jobs हैं जो redundant होने वाली हैं. And I can only suggest you, if you feel yourself कि आप उस category में belong करते हैं, then instead of doubting and questioning and analyzing, I would say rather to create a backup. Actually you still have time जहां पर आप अपने लिए कुछ ना कुछ backup create कर सकते हैं. Okay, perfect. Let me move forward. So as of now, so far so good. How many of you are liking this entire information? Do you like the information which I'm giving it right now to you? If you like it, write down I am loving it. Right, write down I am loving it. बिकॉज जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको इतना ही बोलूंगा सी आई मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि मैं आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बताऊं और बहुत ही आई वुड से डाउन द लेवल, ग्राउंड लेवल पे आपको एक लेमैन्स लैंग्वेज में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन समझाऊं सो दैट कि आप उसको समझ पाए, उसको लेकर के इम्प्लीमेंट कर सकें या उसको यूज कर सकें, अपने लाइफ को सेव कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर कर सकें. ओके, परफेक्ट. नाउ two more point. One thing which we need to understand कि कुछ industries हैं, like I would say there is a big doubt for them to grow. एंड एज आई सेड लाइक जॉब में जो इम्पैक्ट हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली कुछ इंडस्ट्रीज पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है. और वो इंडस्ट्रीज कौन है? लाइक प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड बिग टाइम इफ दे डोंट चेंज देमसेल्फ टू डिजिटल. देन इन दैट केस देयर इज अ बिग रिस्क फॉर देम. फोटो एंड कैमरा एंड रिलेटेड इंडस्ट्री अगर मैं बोलूँ उससे definitely things are going to get completely changed. The way digitalization is happening आज की डेट में, like mobile phone is your laptop, mobile phone is your camera, mobile phone is everything right now. Okay, so like mobile phone has already taken the watch, जो टाइमिंग है ऑलरेडी अगर आज के दिन में देखा जाए, you will find majority of people don't see time in their watch. Actually they see their time in mobile phones. So the need of watch has already gone. Majority of people do not use calculator right now. Majority of people use mobile phone when they need a calculator. That means कि जैसे टाइम बदल रहा है चीजें बदल रही हैं, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट. अगर आज की डेट में अगर आप सोचो नहीं नहीं आई शुड ओपन एन इंडस्ट्री जो कि कैलकुलेटर बनाती है, देन आई कैन टेल यू यू आर ऑलरेडी थिंकिंग समथिंग व्हिच इज रिडंडेंट और गोइंग टू गेट रिडंडेंट राइट नाउ. ओके, सो फोटो एंड कैमरा इंडस्ट्री, ऑफलाइन एजुकेशन अगर मैं बोलूं, आई थिंक डेफिनेटली सर्वाइवल वुड बी देयर, बट जो ग्रोथ की बात करूं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और इसका मैं लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि all the big universities, if we talk about whether it is a global university, Stanford University or like Cambridge or Harvard, जितने भी universities हैं आप देखोगे, most of the universities has added online feature into their education system. They have started online education because they know very well कि अगर मैं ऑफलाइन फिजिकल एजुकेशन पे ही केवल रिलाई करूंगा, वेयर आई हैव अ कैंपस एंड इन दैट कैंपस आई विल हैव ओनली दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल जिनको मैं एक साल में उनको पढ़ाऊंगा और इन्हें इन्हें नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाऊंगा. Their growth is limited and at the same they are not able to utilize the digital
growth, utilizing their brand in the entire world, and that is why their growth was limited. But आज की डेट में अगर वो अपने आप को digitalize नहीं करेंगे, so then their growth will become one of the biggest concern. And all the major universities already have an online program right now, and it was like much required, much need of having the same in the schooling as well, schooling education, जो कि नहीं हो पा रही थी या नहीं हो रही थी, but COVID-19 has now made it possible, where I would say almost every schools and colleges who are like teaching students, they have an online system right now. So definitely offline education is in a big doubt right now कि ये industry कितनी grow करेगी. It has to be an online based education, and that is where I can tell you, जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन की बात आ रही है, वहां पर दो तरह के लोगों का बहुत ह्यूज, आई वुड से, स्कोप है ग्रोथ का. पहला, दोज हु आर एबल टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. ओके, दोज हु आर एबल टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. That means, let's say, if you talk about all these companies, whether it is Zoom or a lot of Google or like Damio, बहुत सारे ऐसे webinar platform है या online platform है who are providing online education, who are providing a platform जिसको आप use करके online education कर सकते हो, right? Those companies, like अगर उनके growth की आप बात करोगे, pre-COVID it was like at a very very low level, but the moment this change has happened, their growth has surged like anything. दैट मीन्स नीड है. अब सवाल ये है कि ये जो नीड है, इसको अगर हम गेज कर पाएंगे, इन दैट केस विल पुट अप समथिंग व्हिच विल हेल्प टू क्रिएट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि लोग यूज कर सकें. नाउ इट माइट बी इन एजुकेशन, इट माइट बी इन अदर फील्ड एज वेल. सिमिलरली जो सेकंड सेगमेंट है जिसमें बहुत ह्यूज स्कोप है ग्रोथ का, वो ये है कि इफ यू हैव एन एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ द फील्ड, ओके, I'll definitely cover one session, might be next in this week itself. That would be about कि कौन से ऐसे segment हैं which you can consider yourself, where you can create your online education kind of thing which can help you to become an entrepreneur. And we call it as like digital entrepreneur, where you can sell something online, your education, whatever you have as an expertise, आप उसको लोगों को educate कर सकते हो online, okay, through your online courses. So that is one of the biggest, I would say, demanding field right now, available for everybody. It does not require too much of experience for you, it does not require too much of business experience to you, it just require you need to have certain specific knowledge. If you are a very good teacher, if you are a very good skill set or like soft skill expert, if you are a very good expert in certain area, whether it is hobbies or some related with that, or you are expert in some kind of medication or spiritual kind of thing, अगर आपकी कोई भी expertise है, you can become an educator, जहां पर आप ऑनलाइन लोगों को एजुकेट कर सकते हो यूटिलाइजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म. एंड आई कैन टेल यू, यू कैन मिंट मनी लाइक एनीथिंग. this is a, this is one of the craziest field available right now for people to explore. If you are thinking about, okay, let me do something as a business, so it does not require huge investment, it requires very minimum investment, and at the same time you can create and start your business in just 2 to 3 months of time, okay. So this is again like when there is a doubt in the industry growth to grow, उसके अगेंस्ट में ग्रोथ स्कोप भी ऑटोमेटिकली आपको मैंने बता दिया कि है यहाँ पे. बीपीओ, एज आई ऑलरेडी टेल यू, कि बीपीओ जहाँ पे भी जो रिपीटेड वर्क है, टेलीकॉलर एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक बीपीओ बिजनेस, ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो है, दे हैव अ बिग क्वेश्चन कि विल दे रियली ग्रो और नॉट, because the change which is happening right now is going to replace majority of these processes, okay. And replaceable skill work, like again I said कि कोई भी ऐसा काम जो skilled वर्क हो, बट अगेन वो रिप्लेस किया जा सके, बिकॉज वो डुप्लीकेबल टाइप ऑफ वर्क है, बट अगेन इट्स अ स्किल वर्क, सो दैट इज समथिंग आल्सो गोइंग टू गेट रिडेंडेंट इन सम टाइम. एंड अगर कोई इंडस्ट्री है जो उस फील्ड में ही काम कर रही है, देन अगेन आई थिंक इट्स अ बिग डाउट फॉर देम टू ग्रो और नॉट इन द कमिंग टाइम, ओके. नाउ हैविंग नोन ऑल दिस थिंग्स, इंडस्ट्रीज, जॉब, बिजनेस प्रोसेस चेंज हो रहा है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रहा है, आई थिंक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? बिकॉज दिस इज व्हाट समथिंग विच यू रियली नीड टू नो, कि व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज नोइंग इज वन पार्ट, बट वी ऑल्सो नीड टू नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ओके. हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड टू नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड राइट नाउ? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम एक्साइटेड टू नो, राइट, आई एम एक्साइटेड टू नो द वे फॉरवर्ड, बिकॉज जानना बहुत जरूरी है. अगर आप ये नहीं जानोगे कि क्या वे फॉरवर्ड है, देन दैट केस इट वुड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि मुझे करना क्या है. बिकॉज नोइंग प्रॉब्लम इज वन थिंग, इट्स लाइक वी ऑल नो दैट वी आर इन अ पैंडेमिक सिचुएशन, COVID-19 is a big problem right now, but if you don't know what to do, then you will be in a panic situation.
Similarly for you, you need to know ki, if this is the situation happening right now, what is the way forward for you? Okay, and I can tell you there are three ways you have to understand. First you need to know that the future is all about digital. Okay, let's accept the fact. I think अगर अभी भी हम इसको accept नहीं कर रहे हैं या accept नहीं करना चाह रहे, then I can tell you face it when it comes to you. But I can only tell you the future is going to be digital, okay, and online, and you need to be ready to learn. So you need to learn the digital way of working. Be very clear. So if you get any platform जहां पर आपको digital learning मिल सके कि how you can work digitally, whether you are planning to build a business, whether you are planning to work as an employee and you want to know कि मेरे फील्ड में digital कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे जानने की जरूरत है, you need to know that because only those people will get preferred or favored who have the knowledge of working in a digital mode. Okay, so you need to learn digital way of working. That is one thing I can tell you. This is the best option for you. अगर आप आज इस काम को करते हो, your future would be secured a bit. And if you are I would say best forward would be think for a business. आज के डेट में आपको मैं सजेस्ट करूंगा think for a business as long run, because आज आप जॉब अगर कर रहे हो तो जॉब में I can only tell you कि job can help you in short term, but it will not help you in long term. क्यों? क्योंकि again the problem what you're facing it right now, already like you were doing job earlier and आज के डेट में let's say some of you might be having an experience of 5 years, 10 years, 15, 20 years like that, and I can tell you अगर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो जहां पर आपकी जॉब सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, then my suggestion to you friends, it can again happen in future. And when something has already come to you as a known devil one time, I would not at all suggest you to face it again after some time as a known devil for you. तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर आज मुझे चेंज करना ही है अपने आप को, आई नो वट एवर आई एम डूइंग इट राइट नाउ इज नॉट गिविंग मी सिक्योरिटी फॉर माई फ्यूचर, then rather I should be able to build it something जो मुझे लॉन्ग टर्म में एक सिक्योरिटी दे सके. एंड आई कैन टेल यू द लॉन्ग टर्म में अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं, फर्स्ट whether job or business, I think this is something which you need to decide. अगर आप आज जॉब कर भी रहे हैं, I'm not saying that put down your job, not at all, but at the same time you should be open to do something where you build up something for yourself as a business. This is one point. Second, preferably you build your business in the digital line or you have a digital kind of thing. And third, if I tell you अगर digital की बात करूंगा तो there are two ways to look it at. One is you think about okay मैं कुछ digital product बना के sell करूं, okay, this is one way. Or second, I can become a person where I can educate people or help people with my skill set what I have as a digital coach or as a digital expert, जहां पे मैं लोगों को वो digital product बनाने में help करूं. Now दोनों option अलग है. You can make a digital product, okay, it can be anything, it can be services, it can be any tools. आप एक digital product बना करके भी sell कर सकते हो. सेकंड, आप एक सेकंड दूसरे एंड पे आ सकते हो जहां पर आप एज अ कोच एज एन एक्सपर्ट काम करके लोगों को गाइड कर सकते हो हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स और हाउ यू कैन एक्सेल इन योर प्रोसेसेस. ओके, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो. दोनों तरीके से ही बिजनेस का ह्यूज स्कोप है. अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज. I would say it is the area to explore right now because it is completely unexplored area right now. There are very few people who are in these fields जो कि या तो डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल कोच की तरह काम कर रहे हैं, who are helping people to build their own digital products. So these both streams are open for you and I would say if you're really thinking about कि मुझे अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करना है, the best option for you would be think about why not become an entrepreneur, why not start my own business in next 1 to 2 years of time or next 2 to 3 months of time, whatever time you decide, and start investing your money and your time in learning that part. Okay, so that is what I can recommend you. I hope the entire session definitely would have really helped you to gain a lot of knowledge. And like since you already gone through, I have a special gift for you because as I said, like I'm already a founder of 21st Century Businesses Hub.com, जहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं हाउ दे कैन बिकम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर. ओके, एंड व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज since you're already here right now attending the session live, or even some of you who are going to watch it on my YouTube as a recorded version, then I can tell you I'm sending you a online test right now. There is a link, आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे link भी है यहाँ पर. This link is something which what you should do is कि you can click this link and do a online test.
Okay, do that online test, and this online test, the way you answer everything and all, it will automatically get you to a place where based on your answering and detailing, you might get access to my all the courses or majority of the courses at just complete discount, or even almost free of cost as well to you. So what you can do is just go ahead, do the test, which will help you first to understand that yes, can you become a digital entrepreneur or not. This is one. So this test would really help you that yes, is digital entrepreneurship is for you or not. Okay, this is one. Second, even if you complete that test and you definitely get a good start, good points there, automatically you will get access to my most of the courses at might be at a huge discount or completely free. It all depends on your answers, whatever you give, right? And post that, once you get it, my suggestion to you would be take that course, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग कि क्या हो रहा है मार्केट में, और अगर मुझे कुछ अपने अंदर चेंज लाना है या कुछ इंप्रूव करना है फ्यूचर के लिए, तो व्हाट आई शुड बी नोइंग इट, बिकॉज डूइंग इज सेकंड पार्ट, नोइंग इज फर्स्ट पार्ट। तो अगर मैं नोइंग वाले फेज पे ही अपने आप को कट कर देता हूँ या यहाँ पर मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं स्ट्रेट अवे जंप कर जाता हूँ कि मुझे करना क्या है, देन आई कैन टेल यू इट विल नॉट हेल्प यू। फर्स्ट पार्ट इज नोइंग इट। So the courses what I have right now, yeah, or even ये जितने भी live session मैं कर रहा हूँ, my objective is to basically help people know exactly what is happening or exactly what you should do for you to get ready for the future. Okay, so it was great talking to all of you, and let me do one thing. ये जो link है, ये link मैं आपको I'm just right now let me take this link and also post it here. Okay, just hold on, let me put this link here. Okay, okay, perfect. So मैं अभी ये link आपको यहाँ पर मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ, and what you can do is right now you can just yeah, so you can see this link here right now, http yourlife.paperform.co. Press this link, और इस लिंक को प्रेस करके you will get directed to that a test page, and just go, and there are some 13-14 questions, just go and complete these tests for you. It will help you understand what exactly required for you to become an entrepreneur. Do that test, and I wish you good luck, and I would love to see some of you through your feedbacks on my either YouTube or through live sessions. Yes, all the information what I've given somewhere down the line, it has really helped you to become a better person, or have really helped you to become prepare yourself for a better future in that case. Okay, it was great talking to all of you, and tomorrow I'll be coming again with another live session जहां पर मैं exactly आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 22 jobs हैं, 22 jobs हैं which are going to get redundant in next 4 to 5 years of time. Okay, so let's meet up there again tomorrow, and till then, bye bye.